मोबाइल फोन के जरिए भी, यानी उसको भी जरा एम्पावर करना है और उसके जरिए आपको 80009 80009 से उस नंबर पर मिस कॉल देना है, सिर्फ एक, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सिंबल से इस तरीके से जुड़ सकें और जुड़कर इस अभियान को सफल बनाने में सदगुरु के और ईशा फाउंडेशन के साथ इस पूरे देश को, देश की सरकार को, जनता को, समाज को, राज्य सरकारों को, सभी को एक साथ जोड़कर इस संकल्प को हम साकार कर सकें। तो एक बार आप सबकी करतल ध्वनि के साथ सदगुरु का, यहां माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी, उनका आगमन हुआ है, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आज के इस आयोजन में, रैली फॉर रिवर्स में। मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें, सामने से हट जाएं। आप सभी से निवेदन है थोड़ा साइड में हो जाएं, पीछे की तरफ हो जाएं, गैलरी में कहीं भी नीचे बैठ सकते हैं। मैं मीडिया के अपने साथियों से भी यह निवेदन करूंगा, क्योंकि सदगुरु उनके लिए अलग से फॉर्मल इवेंट के तुरंत बाद उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, इसलिए मीडिया के साथी भी, उनसे भी प्रार्थना है कि वो भी थोड़ी देर के लिए साइड में हट जाएंगे, ताकि आप सब सीधे मंच के साथ जुड़ सके और मंच के साथ जुड़कर रैली फॉर रिवर्स के इस संकल्प को साकार करने में अपना योगदान दे सके। माननीय राज्यपाल हरियाणा प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी का भी शुभागमन हम सबके बीच में हो चुका है। आप सबके करतल ध्वनि के साथ उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आज के इस आयोजन में, रैली फॉर रिवर्स के इस इवेंट में। सामने से प्लीज हट जाएं, निवेदन है आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जल के बिना जीवन नहीं है, ये हम सब जानते हैं, और इसीलिए आदिकाल से मानव सभ्यताओं का विकास जो है नदियों के तट पर हुआ। नदियों के तट पर ही गांव बसे, शहर बसे, नगर बसे, और धीरे धीरे इंसान ने अपनी सभ्यता को आगे बढ़ाया है। परंतु हमारी ही नासमझी या हमारी नादानी की वजह से ही शायद आज नदियों का जीवन खुद खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। अगर ये नदियां ना रही तो जीवन भी नहीं रहेगा, ये हम सब जानते हैं। इसलिए नदियों को बचाने का एक देशव्यापी अभियान, रैली फॉर रिवर्स की शुरुआत सदगुरु ने की है अपने ईशा फाउंडेशन के माध्यम से। 3 सितंबर की वह तारीख कोयम्बतूर से जिसकी शुरुआत हुई थी, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिवस पर दिल्ली में इसका समापन होगा, जहां सदगुरु स्वयं उपस्थित होकर इस पूरे रैली फॉर रिवर्स से उसको लीड कर रहे हैं। 13 राज्यों, 21 बड़े शहरों से होती हुई यह रैली आज यहां सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में पहुंची है, और देश के लोगों को संवेदनशील करते हुए, नदियों के प्रति जागरूक करते हुए सदगुरु स्वयं यहां आए हैं। ऐसे अवसर पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। निवेदन, कृपया सामने से हट जाएं। आप सबसे प्रार्थना है कि आप सभी किनारे अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच माननीय राज्यपाल पंजाब और प्रशासक चंडीगढ़ श्री वीपी बदनौर जी, हमारी माननीय सांसद किरण खेर जी, उनका भी आगमन हो चुका है। उनका भी इस अवसर पर हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। रैली फॉर रिवर्स के इस आयोजन में आप सबके आने से जो इसको बल मिला है, जो इसको मजबूती मिली है, वो सचमुच हम सबको अभिभूत कर रही है। सभी से प्रार्थना है कि आप सभी बैठ जाएं। देवियों सज्जनों, नदियों को लेकर सदगुरु की जो चिंताएं हैं, आइए उन्हीं के जरिए हम जानेंगे इस बात को कि उनकी चिंता क्या है, उनकी सोच और संकल्प और उनकी अभिलाषा क्या है, और यह भी जानेंगे कि आखिर रैली फॉर रिवर्स है क्या। कोयम्बतूर से जयपुर तक की हमारी जो यात्रा रही है, उस इवेंट की कुछ झलकियां भी एक वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे यहां पर। तो आइए देखें भी, सुने भी, और दूसरों को भी बताएं इस अभियान को और इसके उद्देश्यों के बारे में। एक छोटी फिल्म जो स्क्रीन पर होगी, आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें और भावनात्मक स्तर पर, आस्था के स्तर पर जुड़ जाएं इस रैली फॉर रिवर्स के अभियान से। Next 30 days, I am on the road. I want you to stay awake with me. If you consume water, you must be a part of this. நன்மை அது வேணும்னா நாம ஒரு ஆறு எல்லாம் பார்த்ததானே நன்மை. Here we are at the Vivekananda Memorial Rock, at this iconic place, and the Rally for Rivers is going to take off from here in Kanyakumari. We are glad to hear that governments and the minister and the people of Kerala have managed to revive 1 or 2 important rivers, which is a wonderful act. இப்போ நாம முன்னாடி இருக்கிற சவால் சாமானியமான சவால் இல்லை, நம்ம உயிருக்கு சவால் இது.
சும்மா உணர்ச்சி வசமா போனா இதுக்கு தீர்வு வராது, நமக்கு தீர்வு வந்துடும். I know you're not rallying for rivers, you're just protecting yourself from the sun, and that's what I want you to do for the next 30 days. Sun means like this, rain means like that, nothing happening means like this. Now if you give a missed call, the river will not come up. What we are working towards is a policy. If we implement the policy, in the next 20 to 25 years' time, the water will rise by minimum 15 to 20%. Before we die, we want to see that. If you find a solution for a problem, you must be honored for your intelligence. If you find a problem in every solution, you must be put aside in this country, because we need solutions. When I park the car here, the meter is logging in 3,069 kilometers, 8 days on the road, the rally is rolling on. Rally for Rivers మన తెలుగు రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటిసారిగా విజయవాడ చేరుకుంది. River is not your or my personal property. River is a national treasure. నేను వారికి హామీ ఇస్తున్నాం, ఆ పాలసీని మొదట రాష్ట్రం అమలు చేసే రాష్ట్రం మన రాష్ట్రం ఉంటుంది. बाबा ने इस देश की जैसी नदियां थी वैसी नदियां वापस सौंपने का संकल्प लिया है. I welcome Sadhguru and the Rally for Rivers to the city of Hyderabad, the city of lakes. On behalf of our state of Telangana, I assure that government is ready to join hands for protection of rivers. This is the moment for the citizens of this nation to express very clearly that long-term policies which are for the well-being of the people and the nation and for the future generations, we are ready for that. I've seen people, they keep a little bit of Ganga water for years in their homes, so that the last thing that they consume in their life is Ganga Jal. This river has depleted 44% in the last 50 years. This is no more a joke. मैं सदगुरु जी को महाराष्ट्र सरकार की ओर से आश्वस्त करूंगा, महाराष्ट्र सरकार इसमें अग्रसर होगा, अग्रभागी होगा, हम लोग इसको सफल बनाएंगे. अगर रिवर्स सर्वाइव नहीं होते तो I don't think we are going to survive. So we are with you, sir. And the mothers of Gujarat have also given us a Mahatma and Sardar Patel and a past Prime Minister and a present Prime Minister. I'm asking you now, will Gujarat give me 100 youth? Only qualification is, you must give up one thought, what about me, for 3 years. Environment and concerns of environment are not for the sitting rooms of the elite anymore. It is everybody's business, because it's no more a fanciful engagement, it is a fight for survival. If we want a solution, we need a national policy to treat our rivers as a national treasure, not as individual private property. सदगुरु, आप निकले हैं इस अभियान पर, हम इस अभियान को सफल बनाने में परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे. मध्य प्रदेश में हर नदी पे अभियान चलेगा. In the last 70 years, never once have all the political parties agreed on one thing. This is the first time they're agreeing on this one thing, that this must happen. A nation does not happen because of the leader, a nation happens because of the people. But a time has come, our development and our survival will be threatened seriously in the next few years, where we have to get into a sustainable mode. ये कार्यक्रम केवल एक अभियान मात्र नहीं, ये केवल एक नारा नहीं, या एक जुमला नहीं, यह इस मानवीय सृष्टि को, इस जीव सृष्टि को बचाने का एक बृहद यज्ञ है.
Rajasthan is the 11th state. Very, very happy to be here. आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज इस विशाल कार्यक्रम के अंदर हम सबको इसके साथ फिर से जोड़ने का संकल्प दिलवाने का काम यहाँ किया। A time has come in the country where every citizen has to stand up and express their concern and support for preserving the soil and water. யார் காவேரியாருங்க ஒரு நாளையில் இப்படி காஞ்சி போனது இல்லைங்க. தண்ணியெல்லாம் நிறைய வருது. இவ்வளோ நாளைக்கு முற்போடு இப்போ தானுங்க இப்படி காஞ்சி போச்சு. ಈ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ನೀರು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರೇ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೊಳೆಗಳು. ಆತ ಪಾತಾರೆ ಎಂಗಳೆல்லாம் ಅಳುವ வருது. మా చిన్నప్పుడు అంత మొదలు ఎప్పుడు వరదలే. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. నీళ్లతోనండి మానవుడి జీవనం అంతా నీళ్లతోనుంది. మెయిన్ నీళ్లేనండి మన జీవనాధారం అది. Flooding from monsoon rain in western India has swept away much that was in its path. Western Maharashtra is facing floods and drought at the same time. ಇಂಡಿಯಾ ಭಾಗದ ಭೀಮಾ ನದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. North there are floods, in the south there are droughts. This is a clear case of the mismanagement of the ecosystem. Kerala is starving for water the moment rain stops. पैसा आप कितना ही हो, जब जल ही नहीं होगा तो पैसा किस काम का। The Indian rivers are in a dangerous state. If we don't do the right things in the next 10 years, 15 years' time, it could be too late. Very little will be left. When rain comes, there'll be floods. No rains, it'll dry out. Most rivers are becoming like this. The greatest achievement in this country is, without any modern science, without any technological support, without any great infrastructure, just with traditional knowledge, our farmers have provided food for 1.3 billion people. नदी में 12 महीने पानी बहता रहता था, पर अब नदी बारिश होती है तो नदी में इतनी तेजी से बाढ़ आ जाती है जिससे बहुत नुकसान होता है। விவசாயிகளுக்கும் வேலை இல்லை, வயல்லையும் வெள்ளாமை இல்லை. In the last 10 years, over 300,000 farmers have committed suicide in this country. This is not a joke. That many people did not die in all the 4 wars put together. We keep dismissing it, saying it's because of the bank loan. Yes, all those factors are there. But the most fundamental thing for a farmer is a rich soil and abundant water. If you grow a crop, let us say you took out 10 tons of sugarcane from 1 acre of land. What this means is you took out 10 tons of topsoil. To call soil soil, the minimum organic content is 2%. But today, many states like Punjab, Haryana, in Marathwada and some parts of Tamil Nadu and Andhra Pradesh, the organic content in the soil is only 0.05%. This means this soil is slated to become sand in the next 3 to 5 years. The only way you can replace and enrich this soil is the leaves from the trees and animal waste. Trees we have removed long time ago. Animals are all traveling outside the country. If you eat one animal as a part of your diet, that is not the problem. Millions of animals are being exported. This means you have no way to enrich our soil. Soil and rivers are connected. If we want the river to flow all the 12 months, it is very important the soil must be rich. That is only possible if there are trees.
Only 45 days of precipitation on an average in India must flow for 365 days means there must be substantial vegetation and a network of root system for it to be held in the land and let out into the river drop by drop. When there's no tree cover, rain falls and lots of water enters the rivers quickly, causing floods. Once the rain stops, the river dries up. When there is extensive tree cover, the soil absorbs rainwater easily because tree roots make the soil porous and form tiny channels. Moisture seeps into the soil because of these channels, and water flowing over the ground reduces, lowering the risk of floods. The moisture absorbed by the soil travels beneath the surface and is released slowly into the river even after the rain stops. This ensures that the river flows throughout the year. This must be understood clearly. People think because of water there are trees. No, because of trees there is water. If we have sufficient number of trees, we will have sufficient amount of rain. If there is sufficient amount of rain and there are trees, then the water will sink into the earth and the rivers will flow. We want to make sure on the river sides, at least 1 kilometer on both sides, there are trees. If it's government land, forests. If it is farmers' land, horticulture and other tree-based farming. If we implement this plan, what we have, an economic plan with a significant ecological impact, most farmers can raise their income anywhere between 3 to 8 times in 6 to 7 years. This has to be done in a very organized way. Madhya Pradesh is the first state which responded to my call. मैं सदगुरु जी के पास बैठा था, उनसे चर्चा हो रही थी, तो उनने भी मुझे कहा कि शिवराज, नर्मदा जी बचानी चाहिए और उसके लिए पेड़ लगाने का अभियान प्रारंभ होना चाहिए। If our rivers deplete in our own lifetime, we are clearly making a statement that we are not interested in the future of our children. It is heartening to see today that all of you in great enthusiasm participating in this moment gives us confidence that we are not going to destroy this nation. This effort of wanting to plant 50 crore trees in 3 years' time is a phenomenal commitment from the government of Maharashtra. This has to become a people's movement. This needs will and policy from the government. This needs participation from private industry and businesses. In the month of September, we are planning a river rally. I'm personally driving, covering 16 states, having major events to create a very strong awareness in the country that the rivers of this nation are dying. All the chief ministers are participating in the Rally for Rivers event. Rally for Rivers is a campaign aiming to garner people's support for a positive river policy. As this is a long-term solution, the government will need massive public support to make it happen. You can cast your votes to save our rivers by giving a missed call to 80009, 80009. नमस्कार, मैं हूं शाहरुख खान और रैली फॉर रिवर्स में मैं बिल्कुल और पूरे दिल से साथ में हूं। Reviving the rivers is the most important thing that we should look into. This is the need of the hour. I wish all success to Sadhguru's this divine project. हमारी नदियों को बचाने में योगदान करें। नदियां नहीं तो हम नहीं। If we do not act now, the only thing we'll be handing over to our next generation is basically a barren wasteland. This is a cause that I really support with all my heart. This is a movement which symbolizes a change in consciousness about our relationship to the world. सबको मिलकर आगे आना होगा। We have to come like a team and rally for our rivers. I am rallying for the river. हम सीमा पर खड़े होकर अपने देश की रक्षा करेंगे और आप नदियों की रक्षा करके इस देश के बच्चों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। नदुల రక్షణ అంటే భారత రక్షణ. If not today, then when? मिस्ड कॉल दीजिए। I gave a missed call on 80009, 80009. I urge all of you to do the same.
I beseech all of you to participate in this in whatever way you can. When I say all of you, I mean everyone who consumes water. To have our rivers flowing, to leave this land rich and well is the best gift we can offer to the future generations of this nation. This is not a protest, nor is this an agitation. This is a campaign to raise awareness that our rivers are depleted. Everyone who consumes water must rally for rivers. देवियों सज्जनों, भारत में नदियों का जलस्तर घटने से या नदियों के सूखने से अगर देश का 25% हिस्सा वहां की जमीन डेजर्ट होने के कगार पर पहुंच जाए, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां इस साल में 4 महीने समंदर तक ना पहुंच सकें, रास्ते में अगर दम तोड़ दें, या या 2030 तक जो हमारी पानी की जरूरतें हैं उसका सिर्फ 50% हमारे लिए उपलब्ध हो, तो आप समझ सकते हैं कि अब हम कहां पहुंच गए हैं। इसलिए सिर्फ सोचने का वक्त नहीं है, ये कुछ करने का समय है, जिसके लिए सदगुरु ने पूरे देश के लोगों से आह्वान किया है। और अभी इमीडिएटली जो आप कर सकते हैं, जाहिर सी बात है कि एक मिस कॉल 8009 पर आप अपने खुद भी करें, दोस्तों से कहें, अपरिचितों से भी कहें, क्योंकि ये सबका अभियान है, पूरे देश का अभियान है और इससे इस अभियान को मजबूती मिलेगी और उसी के आधार पर सरकार को एक प्रस्ताव और कार्य योजना सदगुरु के माध्यम से वहां दी जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अब सदगुरु से, साथ ही माननीय राज्यपाल पंजाब और प्रशासक यूटी चंडीगढ़ श्री वीपी बदनौर जी, माननीय राज्यपाल हरियाणा प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी और हमारी सांसद श्रीमती किरण खेर जी से कि वे मंच पर आने की कृपा करें और मंच पर आकर इस रैली फॉर रिवर्स के अभियान को अपना सपोर्ट यहां पर प्रदान करें। उनकी उपस्थिति हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द डिग्निटरीज टू कम ऑन द स्टेज प्लीज। मंच पर एक प्ले कार्ड के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ हमारे सभी डिग्निटरीज का, जिसके जरिए उनका सपोर्ट इस अभियान को मिलेगा। एक प्ले कार्ड हम सबको यहाँ पर सदगुरु को और सभी डिग्निटरीज को प्रदान कर रहे हैं। आपके पास भी है तो आप भी जरूर शामिल होइएगा, क्योंकि ये ओकेजन, ये मौका इस बात का है कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, क्योंकि पानी तो हर कोई पीता है, पानी हर किसी को चाहिए। आइए आप भी अपने अपने प्ले कार्ड्स को उठाइए, हवा में लहराइए और अपना सपोर्ट दीजिए रैली फॉर रिवर्स नदी अभियान को। बहुत बहुत आभार। निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें और मैं निवेदन करूंगा हमारी सांसद श्रीमती किरण खेर जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे बहुत ही आदरणीय सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, आपका स्वागत है चंडीगढ़ में। धन्य हो गए हम आपको अपने बीच पाकर। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक श्री वीपी सिंह बदनौर जी, हरियाणा के राज्यपाल आदरणीय सोलंकी जी और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे साथ उपस्थित श्रीमती प्रनीत कौर जी और
बाकी सभी माननीय अतिथि, ladies and gentlemen of Chandigarh, it gives me great honor to welcome somebody who has given me many times to think about, muse about life and its mysteries by his most wonderful book, Mystics Musings, which gave me support in very difficult times of my life. And I'm really deeply honored to be sharing the stage with him today. It also gives me a great feeling to see so many people here today in support for such a noble cause as Rally for Rivers. Indeed, I think it is something that is long overdue. It builds support, it builds awareness, and I hope we can take it forward and actually move towards solutions which have been put forth. I think that when I think about humankind, which was blessed by so much on this planet, I wonder when we turned from human beings to locusts. पंजाब च कहंदे ने ना टिड्डी आउंदी है तो पूरा दा पूरा खेत खत्म करके चली जाती है. ਅਸੀਂ भी ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਿੱਡੀ ਵਾਂਗੂ ਪੂਰੇ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. We are finishing everything. Groundwater levels, rivers. I remember as a child traveling through this area by car, and I remember beautiful rivers. We used to pass these bridges. The bridges are still there, but now you see that sand is just sand. And it's only, there used to be fast-flowing rivers. There used to be rivers which were swollen in the rains. Beautiful rivers. Now, लोगों ने उसे कमाद उगाई हुई है. मतलब it's actually, I see people जिन्होंने गन्ना उगाया हुआ है वहाँ पर. So it is, what happened to those rivers? Indeed, they are the lifeline of this country, of all of us. And we need to preserve and conserve them. There are already water wars in some states, between some states, and there will be water wars between human beings if we don't conserve our water. Because like they said, the next wars will be fought over water. So we need to really conserve it. We need to do something. And the solution put forth by Adarniya Sadhguruji, I think is a wonderful idea that you take so many acres of lands on both sides of the rivers and plant trees, have plantations over there, so that, the river can be rejuvenated, and various other things which are required to be done. Pradhan Mantri ji has many such wonderful things, especially about the Ganges. There's Namami Gange, in which we are trying to clean the Ganges, and we need to clean all our rivers like that. They indeed are our lifeline. And I'm wearing something which is in blue and green today. I do understand Rally for Rivers is white and green, but I thought blue and green was more appropriate. Blue for the river and green for the green that needs to be planted. So, and I was one of the first people to give that missed call when I just got an SMS long time ago, I think more than a month ago, on my phone, and passed it on to other people. So everybody give that missed call and rally for the rivers of this country, for the children of this country, for the people of this country, for the life of this country. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. जय भारत, जय हिंद. बहुत बहुत आभार हमारी सांसद श्रीमती किरण खेर जी का. देवी सज्जनों, जल को लेकर या नदियों को लेकर चिंताएं हम सबकी हैं, और आवश्यकता सिर्फ ये है कि हम साथ मिलकर काम करें ताकि हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिल सके. ईशा फाउंडेशन का रैली फॉर रिवर्स हम सबको वो प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहा है, और इसी उद्देश्य से आज हम सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी यहाँ उपस्थित हैं. मैं उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी तरफ से और अपनी सरकार की तरफ से जो संकल्प है इसके लिए वो आपके साथ साझा करें. आज के इस बहुत ही पवित्र कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे इस अभियान के, बहुत बड़ा अभियान है ये, जो नदियों के पवित्रता का ये जो अभियान लिया जा रहा है, दिव्यदर्शी योगी सदगुरु वासुदेव जी, हमारे राज्यपाल
पंजाब श्री बिदनौर जी, राज्यपाल हरियाणा श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी, हमारे सांसद चंडीगढ़ बहन किरण खेर जी, उपस्थित भाइयों बहनों व पत्रकार साथियों, ठीक कहा है, जल ही जीवन है। और ये जल एक ऐसा विषय है, प्राकृतिक तौर पर इसका एक जो साइकिल है, ये साइकिल हमको मालूम है कि ठीक पर्वतों से ग्लेशियर पिघलते हैं, नदियों के माध्यम से सारे देश भर में ये जल हमारे जीवन का एक अंग बनते हुए समुद्र में जाता है और फिर समुद्र से वाष्पीकरण होकर के और फिर पुनः बादलों के माध्यम से वर्षा के रूप में मैदान, पहाड़ और पहाड़ पर ग्लेशियर ये बनाता है। तो ये जिस प्रकार का साइकिल है, प्राकृतिक साइकिल है, आज से नहीं आदिकाल से है। लेकिन इस आदिकाल के साइकिल में समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं, हमें जरूर उससे अवगत रहना चाहिए। एक समय एक विश्व जिसकी आबादी बहुत कम थी, जहां विकास की चीजें बहुत कम थी, एग्रीकल्चर भी उस प्रकार से नहीं था, प्राकृतिक वनस्पति यही वास्तव में हमारे जीवन का एक, जिसको कहना चाहिए, शरीर के पालन पोषण का एक अंग बनता था। जैसे जैसे समय बीत रहा है, विकास हो रहा है, आबादी बढ़ रही है और इसके नाते से एक जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। उस जलवायु परिवर्तन के कारण से इन चीजों पर जो असर पड़ रहा है, वो आखिर इन प्राकृतिक संसाधनों पर, इसका भी एक स्वरूप जो बिगड़ रहा है, उसकी ओर हमारा ध्यान निश्चित रूप से जाना चाहिए। इसी में हम देखते हैं कि हमारी नदियां, जिसका प्रदूषण ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे एक कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान किया है कि देश भर की नदियों को स्वच्छ किया जाए। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ये नदियों का, इनका उपयोग पूरे देश भर में ठीक से हो, कहीं बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है, एक ही समय में, तो नदियों को जोड़ने का अभियान भी चलाया था। तो उस नाते से इस प्राकृतिक संसाधनों की चिंता ये हम सबको करनी चाहिए। और मैं आभार व्यक्त करता हूं स्वामी जी का, योगी जी का, सदगुरु वासुदेव जी का, जिन्होंने इस अभियान को अपने हाथ में लिया है। देश भर के युवकों को इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए एक लंबी ये जो यात्रा कर रहे हैं, कोयम्बटूर से प्रारंभ हुए 1 महीना पहले और यहां से अब हिमालय की ओर बढ़ रहे हैं। तो कोयम्बटूर से हिमालय की यात्रा, तो इस यात्रा में देश भर के युवकों को, जनता को जागरूक करने का जो काम किया है, आज आप सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में, जो हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है, आप यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हरियाणा की जनता इस अभियान में आपके साथ खड़ी है। हरियाणा में भले ही कोई भी एक नदी ऐसी नहीं है जो एक्सक्लूसिवली हरियाणा में से निकलती हो। हरियाणा के दोनों साइड पर मुख्य रूप से यमुना नदी है, जो हिमालय से निकल करके हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य से निकलती हुई दिल्ली के साथ से लगती हुई और उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ जाती है। इस यमुना की सफाई के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं, बहुत से STPs लगाए हैं। स्थान स्थान पर इस पानी को, गंदे पानी को उसके अंदर से एंटर न होने दिया जाए, तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमने की हैं। और एक छोटी नदी जो वास्तव में बहुत वर्ष भर चलने वाली नहीं है, बरसात के समय ही चलती है, वो घग्गर नदी। वो भी पंजाब और हरियाणा के बीचों बीच निकलती है, एक्सक्लूसिवली हरियाणा में वो भी नहीं है। इसमें भी पंजाब और हरियाणा सरकारों ने मिल करके उसके अंदर स्वच्छ पानी जाए, बहुत से STPs, बहुत से ऐसे मल संयंत्र, शोधन संयंत्र ये वहां लगाए गए हैं। और मैं समझता हूं और एक वर्ष भर के समय के बाद ये सारे संयंत्र जो पूर्ण रूप से काम करने लगेंगे, तो घग्गर नदी में भी स्वच्छ जल ये वहां आखिर तक, जहां तक इसकी सेवाएं होती हैं, वो पहुंच सके, इस ओर भी हमारा ध्यान है। जहां तक नदियों के संरक्षण का विषय है, एक विषय जो मैं सदगुरु जी के सामने वो ध्यान कराना चाहूंगा, वैसे तो आपको जानकारी है ही, कि हरियाणा एक ऐसे बात के लिए भी विख्यात है। आदिकाल में सरस्वती नदी वो हरियाणा से निकलती थी। हरियाणा का जो आदि बद्री स्थान है, वो एक ऐसा स्थान माना जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थान। लेकिन कालांतर में सरस्वती नदी लुप्त हो गई
और लुप्त होने के बाद उसकी जो श्रद्धा है वो आज भी बनी हुई है। आज भी उसके बारे में बहुत किंवदंतियां हैं कि सरस्वती, कोई कहता है कि प्रयागराज में यमुना और गंगा का जहां संगम है वहां निकलती है तीसरी नदी, लुप्त नदी के रूप में। और कहीं कहीं जो आज के वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि उसका जो मार्ग है हरियाणा से राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, कच्छ के पास और कच्छ क्षेत्र से निकलती हुई और वो सिंधु की खाड़ी में वो गिरती रही होगी। अब जो भी विषय है, लेकिन उस सरस्वती के एक प्रकार से उसकी शोध के लिए हमने एक सरस्वती शोध संस्थान के माध्यम से कार्यक्रम शुरू किया हुआ है और उसी का एक हेरिटेज के नाते से एक बोर्ड भी बनाया है, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड, कि सरस्वती की संस्कृति इसको पुनर्जीवित किया जाए और जहां तक भी संभव हो सरस्वती के जो एक मार्ग इस समय वैज्ञानिकों ने बताया है उसमें जहां तक संभव हो उसको एक प्रवाहमान एक नदी के रूप में पुनः स्थापित किया जाए। उसके लिए कुछ काम हम कर रहे हैं। कहीं जो छोटे आज भी ऐसी नदियां हैं, बरसाती नदियां, उन पर बांध लगा करके उसका पानी वर्ष भर नहीं तो कम से कम 6-7 महीने 8 महीने एक उस पवित्र भाव से उस नदी के अंदर वो चालू हो, प्रारंभ हो, राजस्थान तक हम उसको पहुंचा दें। इस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेरा भाव कहने का ये है कि ये जो नदियों का स्वच्छता का, पर्यावरण का जो काम जो आपने हाथ में लिया है, ये बहुत ही एक ऐसी एक सराहनीय, एक प्रशंसनीय कार्य है जिसके लिए हम कम से कम हरियाणा सरकार, हरियाणा की जनता के रूप में आपको आश्वासन दिला सकते हैं कि इस अभियान में जो भी काम आप हमारे सामने रखेंगे, हमें बताएंगे, उस पर हम पूरा उतरेंगे और उसमें पूरा हम सहयोग करेंगे। इस काम के लिए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी का, उनकी उपस्थिति के लिए भी, उनके उद्गार के लिए और उनके उस संकल्प के लिए जो उन्होंने रैली फॉर रिवर्स के लिए यहां पर आपके सामने साझा किया है। देवी सज्जनों, पंजाब ऐसा प्रदेश जिसका नाम ही 5 आब यानी 5 नदियों, 5 दरियाओं की तरह उसके आधार पर रखा गया और वो पंजाब वो भी आज कहीं न कहीं जल की कमी की वजह से जूझ रहा है बहुत सारी चुनौतियों से। आज माननीय मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को भी इस कार्यक्रम में होना था, तय था, लेकिन अचानक किसी बहुत ही आवश्यक काम की वजह से वो ना आ सके। लेकिन पंजाब सरकार और ईशा फाउंडेशन के बीच एक MOU साइन हुआ है, जैसे कि सदगुरु की इच्छा है कि नदियों के किनारे 1 किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा हो जिस पर वन लगाया जाए ताकि नदियां सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें और जो वाटर रिचार्जिंग है ग्राउंड वाटर के लिए वो भी सुनिश्चित किया जा सके। इस उद्देश्य से जो MOU साइन हुआ है उसको एक्सचेंज के लिए मैं निवेदन करूंगा पंजाब सरकार की तरफ से वहां के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट श्री MP सिंह जी यहां पर उपस्थित हैं और ईशा फाउंडेशन की तरफ से यूरी जैन जी, उन दोनों को मैं आमंत्रित करता हूं इस मंच पर ताकि ये MOU जो साइन हुआ है नदियों के संरक्षण के लिए, नदियों को बचाने के लिए और सदगुरु की प्रेरणा से तमाम अलग अलग राज्यों में जहां जहां से यात्राएं निकली हैं और दूसरे राज्यों में भी वो सभी आगे बढ़कर इस काम में अपना योगदान और मदद दे रहे हैं। आइए आप सबकी शुभकामनाएं इसमें शामिल हों इस MOU में और उस संकल्प को साकार होने का अवसर मिले और हम उसके साक्षी बने। सदगुरु की कृपा से सभी डिग्निटरीज की गरिमामयी उपस्थिति में ये MOU एक्सचेंज जो है श्री MP सिंह एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डेवलपमेंट पंजाब और यूरी जैन जी ईशा फाउंडेशन की तरफ से आप सबकी तालियों के रूप में आपकी शुभकामनाएं जरूर मिलनी चाहिए। बहुत बहुत आभार सदगुरु का, डिग्निटरीज का, सभी विभूतियों का और बहुत बहुत आभार, शुभकामनाएं, निवेदन सदगुरु से और सभी विभूतियों से कि वे अपना स्थान ग्रहण करें और मैं प्रार्थना करूंगा हरियाणा के राज्यपाल माननीय प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। रैली फॉर रिवर्स के संयोजक
और अच्छे कार्यों के लिए, कल्याणकारी कार्यों के लिए, हम सब के लिए, पूरे देश के लिए, विदेश के लिए मार्गदर्शक ऐसे श्रीमान सदगुरु जग्गी वासुदेव जी, पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक, मेरे सहयोगी रहे श्री वीपी सिंह बदनौर जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री, इनका सारगर्भित संदेश हम सबने सुना, श्री मनोहर लाल जी, चंडीगढ़ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती किरण खेर जी, इस अवसर पर उपस्थित पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के प्रशासनिक अधिकारीगण, इस क्षेत्र के गणमान्य महत्वपूर्ण सभी महानुभाव, पत्रकार बंधुओं, उपस्थित भाई और बहनों, सदगुरु महाराज की यह यात्रा जनजागरण यात्रा जो 3 सितंबर से कोयम्बटूर से प्रारंभ हुई, कन्याकुमारी होते हुए अन्य राज्यों में होते हुए 2 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। यात्रा पब्लिक अवेयरनेस के लिए है, जन जागरण के लिए है और अपने देश के संतों का प्रमुख रूप से यही काम रहा है कि समाज के कल्याण के लिए, देश की भलाई और विकास के लिए लोगों को जागरूक किया जाए। आज हम जानते हैं कि अपने जीवन के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए जल कितना महत्वपूर्ण है। जीवन का नाम ही जल है। भगवान ने सृष्टि की रचना की है, उस सृष्टि के अंदर अन्य चीजें महत्वपूर्ण है, लेकिन जल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जंगल, जमीन, जानवर और जलवायु, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सबकी सब जल के बिना अधूरी है। और हम देख रहे हैं कि अपने देश में अन्य संकटों के साथ साथ जल का बहुत बड़ा संकट आ रहा है। महत्वपूर्ण नदियां जो जल देती थी, उनको जल देने की क्षमता बड़ी तीव्रता से घटी है। गंगा तो 50% तक पहुंच गई, कई नदियां 44% तक पहुंच गई। ऐसी स्थिति में हम सोच सकते हैं कि जल कितना महत्वपूर्ण है। और इस विषय को लेकर के पब्लिक अवेयरनेस के लिए, जन जागरण के लिए सदगुरु महाराज ने जो यात्रा निकाली है, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूं और अपनी तरफ से आभार भी प्रकट करता हूं। इस यात्रा के दौरान आज वो चंडीगढ़ में हैं। चंडीगढ़ ये महत्वपूर्ण स्थान है, इसको हम त्रिवेणी कहते हैं, क्योंकि हरियाणा की राजधानी भी है, पंजाब की राजधानी भी है और यूनियन टेरिटरी भी है। और इसलिए त्रिवेणी में, चंडीगढ़ में उनका स्वागत है। और जिस काम को लेकर के वो आगे बढ़े हैं, उस काम की देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है। वैसे केंद्र की सरकार ने भी इस तरफ अलग से ध्यान दिया है। गंगा के पवित्रीकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए, स्वच्छता के लिए अलग से पोर्टफोलियो खोला है, अलग से उसके लिए मिनिस्टर है।
नर्मदे गंगा परियोजना, इसी के साथ साथ पूरे देश की जितनी भी नदियां हैं जो जल प्रदान करती हैं, उसके लिए राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना भी है। लेकिन योजना अपने स्थान पर होती हैं, उसको क्रियान्वित करने के लिए पब्लिक का, जनता का सहयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। देश में, समाज में कोई भी काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक वो प्रत्येक व्यक्ति उसको स्वीकार न करे। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर एक व्यक्ति एक कदम आगे जाएगा तो पूरा देश 125 करोड़ कदम आगे जाएगा। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति एक कदम आगे जाए। और इसलिए इन योजनाओं को, राष्ट्रीय जल संरक्षण योजना हो, नर्मदे गंगे परियोजना हो, जहां जहां सिर्फ जाती हैं, और भी कितनी नदियां हैं अपने देश के अंदर। उत्तर में देखेंगे तो सिंधु, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र, भारत के मध्य देश में देखेंगे तो गंगा, दक्षिण में देखेंगे तो कावेरी, कितनी नदियां हैं। और इन नदियों से ही विकास होता है। प्राचीन काल में तो सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। सरस्वती नदी के किनारे, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे थे, वहां तो वेदों की रचना हुई है। संतों ने कितनी तपस्या की है। गंगा के किनारे के अंदर बैठ करके कितने सारे पवित्र काम हुए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है, और ऐसी मान्यता थी कि जहां पर नदियां होती हैं उसके किनारे गांव बसते थे। और इसलिए ऐसी नदियां अगर वो सूख रही हों तब समाज कैसे बचेगा, देश कैसे बचेगा। और इसलिए इस बात की जरूरत है कि इस अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए। जब तक जन आंदोलन कोई चीज नहीं बनती तब तक पूरे देश में सकारात्मक परिवर्तन नहीं होता। 1000 वर्ष से ज्यादा गुलाम रहा देश, लेकिन पूरे समय में देश के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास होते रहे, काम होते रहे, बलिदान होते रहे। लेकिन जब तक वो जन आंदोलन नहीं बना तब तक देश को स्वतंत्रता नहीं मिली। और जिस तरह जन आंदोलन बनाने का श्रेय महात्मा गांधी को जाता है, जब उन्होंने 9 अगस्त 1942 को आह्वान किया था कि अंग्रेजों को भगाओ, और इनको भगाने के लिए डू और डाई, कुछ भी करो लेकिन भगाओ। वो सपना 5 वर्ष में तब पूरा हुआ जब वो जन आंदोलन बना। और इसलिए देश में जितने भी संकट हैं, जो भी विकास में बाधक हैं, जैसा देश के प्रधानमंत्री ने 9 अगस्त 1942 को संसद का विशेष अधिवेशन बुला करके और एक संकल्प लिया है कि हम इस देश में गंदगी नहीं रहने देंगे, गरीबी नहीं रहने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं रहने देंगे, आतंकवाद नहीं रहने देंगे, जातीयता नहीं रहने देंगे और सांप्रदायिकता नहीं रहने देंगे। और ये संकल्प उन्होंने लिया है और इसको 5 वर्ष के अंदर सिद्धि तक ले जाने की जरूरत है। लेकिन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसका संकल्प नहीं लेता, डिटर्मिनेशन नहीं लेता और जन आंदोलन नहीं बनता। महाराज सदगुरु जी ने इसको जन आंदोलन बनाने के लिए जो ये प्रयास प्रारंभ किया है, ये स्तुति के योग्य है। अन्य राज्यों ने भी इसका सहयोग किया है। आज पंजाब ने और इस अभियान के साथ जो मेमोरेंडम हुआ है, इसी तरह सारे के सारे राज्य, जैसे मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम नदियों को बचाएंगे, और नदियों को बचाने के जितने प्रयास सुझाए गए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा नदी जो जीवन रेखा मानी जाती है मध्य प्रदेश की, वहां के मुख्यमंत्री ने तो 3 महीने की यात्रा निकाली और एक ही उनका उद्देश्य था कि नदी के दोनों किनारे पर 1 किलोमीटर अदर दूसरी तरफ प्लांटेशन होना चाहिए। और पूरे मध्य प्रदेश की जनता को इसके लिए उन्होंने खड़ा कर दिया। और इसलिए आंदोलन पूरे देश के अंदर अभी तो 16 राज्यों सब दूर जो चला है, उसकी प्रशंसा करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि 21वीं शताब्दी में पानी की बहुत ज़रूरत है। उसको बचाने के लिए हम सब लोग आगे आएँ। और मैं भी स्वामी जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम अपने प्रयास से, संपर्क से इसमें पूरा योगदान करेंगे, क्योंकि देश के कल्याण के लिए आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल हरियाणा प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी जी का। और देवी सज्जनों, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इस बात से हमारा आत्मबल बढ़ता है, हौसला बढ़ता है आप सबके यहाँ आगमन से, और इस मंच पर यहाँ इसकी शोभा बढ़ा रहे
माननीय राज्यपाल पंजाब और प्रशासक चंडीगढ़ श्री वीपी सिंह बदनौर जी से मैं अब निवेदन करूंगा कि वो अपने संबोधन के लिए पधारें। श्री सदगुरु जगी वासुदेव जी, Honorable Professor Kaptan Singh ji, Governor of Haryana, Honorable Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal ji Khattar Sahib, Madam Kiran Kher, Member of Parliament, Chandigarh, Madam Praneeth Kaur, representing Punjab, all the bureaucrats present here, police officers, media friends, and this august gathering, ladies and gentlemen. First and foremost, I feel privileged and happy to have associated with this great historic move and this rally for rivers from the day one, because I was invited by Sadhguru to Coimbatore and we started it from there. I recall there was enthusiasm in Coimbatore, and from the villages that we moved, it started gathering, and it has traveled nearly over 6,000 kilometers and will be traveling another 1,000 kilometers to Delhi. We all know the water woes and the concern for water. There is a requirement for the agriculture. There is a requirement for the drinking water. And the depleting rivers and the depleting water tables is a great concern. And people have said that if there's going to be a third world war, it will be on water issues. Sir Sadhguru, our gratitude that you have taken up this great move, that the Prime Minister's vision has also been how to save water, and his work in Ahmedabad, in Gujarat, is well known, what he has done to Narmada. And I don't know if you have visited Ahmedabad, because I used to be in Ahmedabad many years ago. And there used to be no river in the middle of Ahmedabad, and today there is water there. But let me say that at the turn of the century, 1901, country, India had about nearly 60% forest area. And Khattar Sahib was very right that it is the industrialization, many other urbanization pressures, the pressures of population, agriculture. And all that is the reason that today the forest cover in India is only 22%. And I hail from a state where you were yesterday, sir, and there was so much enthusiasm because for Rajasthan, water is such a big issue. I've also visited Cherrapunji in the heydays,
And the rainfall there used to be maximum in the world. But after many years when I visited again, because of the deforestation, logging, it had come down. It is not the most, it doesn't have the most rainfall in the world today. I'm also from a state, and I recall many years ago that I visited, and that is the issue of the water in Rajasthan, where there was so much enthusiasm to listen to you. And I visited one area, and you'll be surprised to know, in Jaisalmer, where it has the scantiest rainfall in the world. And those are the issues of water. And the scantiest was, I wanted to know what exactly was there. And that village, they brought out children who were 7 years old, and they did not believe that water can come from heavens, can come from clouds. They said, "Ye tum to jhoot bolte ho ki pani aise barsat bhi kabhi hoti." But today there was, and we all know that Rajasthan, which is 11% of the landmass in India, has only 1% water. But I'm here in Punjab, the land of 5 rivers, as it was called, and that's how the name came about. I'm here in Chandigarh, sir, and Chandigarh is the place that we are welcoming you. We call it the City Beautiful for reasons. It has the greatest green cover in any city in India. And they all know and how they value Sukna. And when I came here, I was worried that if Sukna goes dry, what will Chandigarh do? And the rain gods have been kind, and I think they knew that you are coming here, and that's why it's full. But it becomes my duty and responsibility to see that it remains like that, and we are working hard for that, sir. Let me, in the end, only say that your program is, and this Rally for Rivers is a referendum from the country to endorse your view that we must go ahead. And it's the vision of the Prime Minister also. Thank you very, very much. बहुत बहुत आभार माननीय राज्यपाल पंजाब और प्रशासक यूटी चंडीगढ़ आदरणीय बदनौर जी के। दिव्य सज्जनों, आप जानते हैं कि 3 सितंबर को ये रैली फॉर रिवर्स शुरू हुई थी कोयम्बतूर से। 4 को कन्याकुमारी, 5 को तिरुवनंतपुरम, 5 को उसी दिन मदुरई, 6 को त्रिचुरापल्ली, 7 को पुदुचेरी, 8 को मैसूर, 9 को बेंगलुरु, 10 को चेन्नई, 13 अमरावती, 14 हैदराबाद, 17 मुंबई, 20 को अहमदाबाद, इंदौर और उज्जैन 23 तारीख, भोपाल 24, लखनऊ 26, जयपुर 28 और आज 29 तारीख चंडीगढ़, कल हरिद्वार और परसों दिल्ली 2 अक्टूबर को। और इस पूरे 9,500 किलोमीटर की यात्रा को जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया है, प्रेरणा दी है, ऊर्जा दिया है, ऐसे सदगुरु को मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आप सबकी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय सदगुरु। From a very early childhood, I was profoundly involved with mountains,
forests and rivers. When I say involved, not seeing them as a resource, not appreciating the beauty of what there is in nature, but my involvement was that I always experience when for weeks on end, when I was lost in the jungle, or people thought I was lost, I had to tell my parents I was lost, I couldn't find my way. Or when I floated down Kaveri for almost 13 days at one time, on just 4 truck tubes and a few bamboos, my experience of this forests and rivers was, it was a life larger than myself, a much bigger life than who I was. People like you and me come and go. The rivers have been flowing for thousands of years. Such a mighty life, we have brought it down to its knees in a matter of 50 years' time. To a point, major rivers in this country have become seasonal. The great rivers of the nation that we very proudly sing about, talk about, even in our anthem, it is there. Narmada, Krishna, Ganga, all Kaveri becoming seasonal. You must understand, a perennial river, when it becomes seasonal, it's just a question of time. And it's ticking very fast. I've been watching with some concern for the last 25 years that rivers are steadily depleting. Not 1 year up, 1 year down. Don't go by the rainfall. This year monsoons is little heavy, your dams are full, you think river is doing good. No. It has been steadily going down. If you're only thinking of your usage, maybe it's doing little better. But if you're looking at river as a life, it is depleting steadily down. And in the last 7 to 8 years, the depletion has been very steep. So I've been watching with concern and I've been talking to a few people and many people around. Then I realized, everybody knows what's the problem. And most people know what is the solution also. Only thing is, somebody had to bell the cat. You needed a fool to do that. Here I am. Why I'm saying this is not something which will show results tomorrow morning. It is not something that will show results in the next 2 years or 3 years. We are working towards a policy so that nation remains focused towards sustainable way of managing this country. Though as a culture we might have existed here for over 10,000 years or more, as an independent republic, we are just 70 years old this year. When we got our independence in 1947, there was no commerce, there was no industry, there was no infrastructure, and above all, the nation broke into 3 pieces. Over 500,000 people killed, over 5 million people migrated here and there. Enormous social stress in the entire belt of this nation. So we immediately went into a survival mode for the next 50 years. When we are in a survival mode, we do desperate things which we think are solutions. So it is not for us to look back and make judgments on those decisions made at that time, because we were in a survival mode, we had to do what we had to do. In the last 20 years, we have been in a development mode. Development is definitely happening. I crisscrossed India on my motorcycle many years ago. This time around I'm driving south to north, and I find in many states roads are as good as anywhere in the world. If you're driving through Telangana, Andhra Pradesh, some parts even Lucknow to Agra, you could be driving in California. It's as good as that.
So development is happening, still though it might not have touched every Indian in the country, still many people unfortunately are left out. Development is definitely happening, but we have come to a point where we have to think of sustainability. Development is fine, but we have to think of sustainability, otherwise both our development and our survival will be threatened. These are not alarmist activist talk, there is proper science to this. I am not a scientist nor an environmentalist, but I have a keen sense of seeing things, what I'm seeing around me. From the age of 12 to 17, every day, almost every day, I swam in Kaveri. Today if I go to the same place, I can just walk across the river. There is no more swimming possibility, it is not as deep as my arm, I cannot swim anymore, I can only walk across the river. Bangalore city 50 years ago had 3 rivers inside the city and nearly 1,000 lakes. Today, rivers, nobody knows where is the river, it's gone. Totally, it has disappeared. And out of this nearly 1,000 lakes, today we have 81 lakes, out of which 40 of them are frothing with chemical waste. You heard of froth in Bangalore? So 40 of them are actually sewer collection, it's not really a lake. So out of 1,000, only 40 lakes are left. Narmada has depleted over 60%, Krishna has depleted over 70%, Kaveri over 40%, Ganga 44%. Out of the 800 tributaries in the Himalayas for Ganga, 470 of them have become seasonal and they run only 3 to 4 months. In the Ganga basin, which is the largest river basin in the country, which covers nearly 25% of India's geography and 33% of India's agriculture, 79% of the green cover has been removed in the last 50 years. In Sabarmati, 94% of the green cover has been removed. I'm asking, what is our plan for this country? What is our plan for this country? It looks like we think we are the last generation in this nation or what? That's what it looks like. Because these are not jokes, you just go about and see for yourself. Open your eyes and just go and see. Talk to somebody on the river bank who is over 60 years of age, what it was like in their childhood and what it is today. They will tell you, you don't need any science for this, you just need eyes. Before independence, every second, third year, we used to have a famine in this country. What do you think is the kind of numbers that the famines killed? In tens? In hundreds? In thousands? No, in millions. 1943, Bengal famine killed over 3.5 million people in 2.5 months' time. I want you to understand, this is not like a nuclear bomb, boom, and everybody died. This is like slowly shriveling yourself out and dying without food and water. I want you to know the pain of this because we are once again driving the country in the same direction. Our ability to grow food in this country has been our biggest pride. Many things we have done in the last 70 years. We have built businesses, we have built industries, we built infrastructure, our scientists are going to Mars. But the greatest achievement in this country is, without any infrastructure, with hardly any science, just with traditional knowledge, our farmers have been providing food for 1.3 billion people. This is not a small joke. This is not a joke, because a bunch of CEOs were there with me and they were talking all over the place. I said, see, I'll give you 10 acres of fertile land. 10 of you get together, you are all Harvard, Wharton, this one, that one, everything, all right? I'll give you 10 acres, grow me 5 different varieties of crops. I'll give you everything you want. Just do it and show me. Just read a book and do it, let me see. I'm telling you, this is the most precious knowledge we have. That is, with 8 to 10,000 years of history of agriculture, our farmer, he looks illiterate, but he knows the magic
of transforming mud into food, it's not a small thing. If you do not understand what I am talking, today for lunch, along with your lunch, have a spoon of mud on the side like a char. Just little in between you eat. You will understand what it means to transform mud into food. It's not something… I don't know, most people, city people think it comes from a superstore. Food doesn't come from a store, food comes from the land. And somebody should know how to transform this mud into food. We have taken it for granted because 65–70% of this population just knows how to do this. You go and ask any farmer in the country, how many of them want their children to get into farming? Believe me, it's less than 15%. So this means in another 25–30 years' time, when this generation passes, we are going to lose this phenomenal knowledge of how to transform mud into food. The number of varieties of things that we grow in this country, nowhere else on the planet anybody is growing, do you know this? The number of cereals, the number of pulses, the number of legumes, the number of vegetables that we are growing, nowhere else on the planet this many variety of things are grown. But we will lose this completely because no farmer wants his child to go into farming. They're all preparing their children to somehow get to the city or go to America. Yes, this is what is happening. And land, especially we are here in Punjab and Haryana, I think the video was showing this, the depletion of the soil is very bad. Somebody was telling me yesterday, I don't want to say these ugly things in front of the Chief Minister and the Governor, but yesterday when I was driving through Rajasthan, they were telling me there is a train which is called Cancer Express or something. Is that so? So, what is our plan for ourselves? What is the plan we have for ourselves, for our children and for this nation? What kind of plan do we have? Or are we such nincompoops that we don't have a plan, we will just do idiotic things forever and hope something will work one day? This we know. If you look up, everything will be okay. Unfortunately, I want you to understand, this is the only culture, this is the only and only culture forever which taught you your life is your karma. That means your life is your making, yes or no? It is your life is your doing, this is what we taught you always. But now all the time you're looking up, you're on a round planet. When you're on a round planet and the damn thing is spinning, how do you know which is up? I'm asking. Okay, sir. Do you know which is up? Are you capable of knowing which is up in this cosmos? No, but you're going about like this. It's time to look down. We always taught you before you step on the land to do this. Now you're doing this, what happened to you? Yes, this is a land where we taught you how to bow down to the soil, to the water, to the tree, to the rock, to the animal, to the man, woman, child, everybody we did this. But now only like this. Now this is a disaster because you're looking for solutions from elsewhere, not from within us. This means we are heading for a disaster. That's what it means. And I'm telling you, this is far more serious than most people understand. Because the depletion of rivers is happening so rapidly. In Bangalore city, the borewells are going 2,000 feet. 2,000 feet, you understand? Tell me which tree can put its roots to 2,000 feet and take its water sustenance? Is it a possibility? So there are population pressures. We can't take off the people, people are there. But should we not have appropriate amount of greenery, appropriate amount of water resource? How? We must understand there's only 40 to 45 days of rain on an average in this country. We have to hold it in the land. For this, the land has to be rich, there is no other way to hold it. And this is our moment. People, they've become such online warriors. They make a call and they look, where is the river? River not coming up.
Oh, this is not an online river. This took some time to destroy, and it'll take some time to come up. If we get this going as a national policy to treat our soil and water as national treasure, because this is the only treasure we really have, if you ask me. Yes? This is the only real treasure we can hand it over to the next generation, that we have a fertile land and abundant water. What else are you going to give it to them? You're going to give them jewelry? Where will they wear this and walk around? I mean, where is there to walk around when there's no food in your stomach? It means nothing. So, we may not go into famines. Today we will transport food, we will import food, we will do this, we'll do that. I want to tell you already, 17% of the pulses in India are imported. The dal that you're eating in Punjab, maybe 17% of it is imported. This is the only dal-eating country on the planet, and somebody else is growing it for us. You think you can feed 1.3 billion people with imported food? Is it a possibility? Obviously, we will let certain number of people die, isn't it? Yes or no? 300,000 or 3 lakh farmers have committed suicide, or more than that have committed suicide in the last 10 years. Even the 3 wars did not kill this many people. And every time this happens, I see news reports, because the tomato prices crashed, they killed themselves, or because the bank is aggressive, they kill themselves. Maybe these issues are there, but the real issue is, if you want to do farming, you need rich land and abundant water. If these 2 things are not there, then farming is definitely suicide. Yes, it is. It will drive anybody in that direction, and that's what is happening. This is our moment in history. Either we stand up as responsible citizens and see what can be done. What is the use of a missed call? I want you to understand, this is not an election-winning policy. If we go into this now, there are legislative challenges, there are legal challenges, there are administrative challenges and many complexities in execution, many. If we sort all this out in the next 1 year, it will take, with aggressive implementation, it'll take anywhere between 10 to 15 years to implement. And it'll take another 5 to 10 years before actually you see increase in the flows of water, which you can visually see. 15–20% rise if you want, it'll take nearly 15 to 25 years. In 15 to 25 years means anywhere between 4 to 5 governments would have come and gone. We don't know who will be ruling this country, whether we will be alive or not. So who will take such a step which will produce… which involves huge financial outlays and many execution complexities, and a whole lot of resources have to be put into this? Who will take such a step for a policy which will produce results after 20 years or 25 years? Unless people of India, in one voice you say, we are with you if you take a long-term policy for the well-being of this nation. This is what you're doing when you give a missed call. Our way of doing things have been, when we face problems, we either respond to it emotionally or politically. Both these things won't work. We need to approach this very strategically, scientifically. So right now, what should I do is the immediate question. There are 3 things you must do. First thing is, you must give a missed call. Have you? Yes. Then everybody that you know, your friends, family and the Facebook, all of them must give a missed call. And everybody that you do not know, you must make sure they give a missed call. These are the 3 things you must do right now, because without taking this step right, you try to take that step, it is no use. This step has to be taken right so that the government feels empowered
that the people of India are with us to take such a long-term policy and invest money and resources in something that will produce results after 20 years. Will you please sing this after me? Bharatam Mahabharatam Ganga Narmada Punyatirtam Sindhu Saraswati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirashtrasya Mahamritam Bharatam. We will meet the media right here if you just wait for a few minutes. बहुत बहुत आभार सबका। आप सब बैठे रहेंगे प्लीज, आप सब बैठे रहेंगे। डिग्निटरीज को सी ऑफ करके सदगुरु वापस आ रहे हैं हॉल में, मीडिया को एड्रेस करेंगे, मीडिया के साथ इंटरेक्शन। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही बैठे। Bharatam Mahabharatam Ganga Narmada Punyatirtam Sindhu Saraswati Kaveri Jivana Karana Mula Tattvam Nadirajrasya